Dr. Manaswini Yogi. I have been a associate professor in philosophy for last 40 years. I taught in a very prestigious college of Delhi University since 1987. Philosophy has been my main subject, though later on I also ventured into the field of mass media and mass communication and did another MA. मेरी जो अपनी जर्नी है फिलॉसफी की, वो भी बहुत एक मज़ेदार जर्नी रही। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हायर मैथ्स पढ़ा स्कूल में। मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, जब उन्होंने मुझे साइंस लेने के लिए समझाया। मैथ्स मेरा बहुत वीक था, मुझे समझ ही नहीं आता था, आज भी नहीं आता है कुछ हद तक, पर मैंने लिया और किसी तरह से उसमें पास भी हुई। पर जब मैं 11th क्लास करके 1973 में निकली, तब मेरे फादर का मन था कि नहीं, मैं डॉक्टर ना बनूं, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट आइडलिस्ट एंड अ मॉडलिस्ट। तो उन्हें ये लगता था, वैसे भी वो होम्योपैथी डॉक्टर मुझे बनाना चाहते थे, क्योंकि वो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे बहुत साल अपने आप ही। वैसे वो भी संस्कृत के प्रोफेसर थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, वहीं मैं बड़ी हुई। पर उनको ये लगा कि अगर मैं होम्योपैथी डॉक्टर बनूंगी, और उस ज़माने में तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास कोई जाता भी नहीं था, बहुत लोग बिल्कुल नहीं जाया करते थे, क्योंकि होम्योपैथी जो पैथी है बहुत इफ़ेक्टिव है, पर कई बार लोगों को लगता है कि वो बहुत धीरे-धीरे असर करती है। और आजकल के फ़ास्ट ट्रैक ज़माने में लोगों को कॉम्बीफ्लेम और डिस्प्रिन चाहिए कि मुँह में डाली और सिर दर्द गायब हो गया। तो इसलिए होम्योपैथी वाज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर पैथी। But when I finally finished my 11th and it came to the decision had to be taken that what should I do? So my father said, नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि अगर तुम होम्योपैथी डॉक्टर बनी तो तुम हर रोज अपनी क्लिनिक पे बैठ के ये मनाओगे कि अरे भाई भगवान, लोग बीमार पड़े, मेरे पास आए, तभी मेरा घर चलेगा, तभी मेरी कमाई होगी। तो तुम लोगों की बीमारी की कामना करोगी, इसलिए उन्होंने मुझे डॉक्टर नहीं बनने दिया। अब मेरे पास चॉइस यही रह गई कि मैं किसी भी कॉलेज में अपना पढ़ाई करूं। साइंस स्टूडेंट थी तो सोचा इंग्लिश करेंगे या साइकोलॉजी करेंगे, पर बिकॉज मैथ्स में मेरा बहुत हाथ तंग था, तो बहुत हाई परसेंटेज नहीं मेरी आई थी उस टाइम। मेरे उसमें इंग्लिश और साइकोलॉजी मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। पर इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में, जहाँ से मैं पढ़ी, जहाँ मैंने पढ़ाया 40 साल, वहाँ पे मुझे उस समय फिलॉसफी ऑनर्स ऑफर किया गया। फिलॉसफी ऑनर्स कभी सुना नहीं था, क्योंकि फिलॉसफी स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, और यही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ स्कूल हैं जो पढ़ाते हैं, पर बहुत कम स्कूल ऐसे हैं। खैर, मैंने फिलॉसफी ले लिया और फिलॉसफी ऑनर्स करना शुरू किया। 15 दिन बाद मेरी तब की प्रिंसिपल मिस उत्तम सिंह, उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और कहा कि क्या तुम अब सब्जेक्ट बदलना चाहती हो, इंग्लिश या साइकोलॉजी, बताओ। पता नहीं क्या था फिलॉसफी में कि 7-15 दिन पढ़ने के बाद मैंने उन्हें कहा, नहीं मैम, आई डोंट वांट टू चेंज माय सब्जेक्ट, आई विल डू फिलॉसफी। दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर, एंड आई डिड फिलॉसफी ऑनर्स। इट गोes without saying, I immensely enjoyed it. I just immensely enjoyed it because it gave me a lot of scope to think, analyze, write on my own, and do my thinking, read, do my thinking, and write on my own. I did BA Honors Philosophy, and I was second in the university in BA.
Then came the issue that now one has to do MA. What to do? Now, my father, who was near to his retirement, felt that if I do philosophy MA, very few colleges, at that time only 5 colleges used to teach philosophy. So इसको तो जॉब मिलेगी नहीं और मैं तो और कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ पढ़ा सकता था, पढ़ा दिया या पढ़ा दूंगा, अपने पैरों पे बच्चे को खड़े होना है. So he kept convincing me that I should do English MA or Pol Science MA, and if not college, I may do B.Ed later and get into a school. At least I'll get a job. He kept convincing me day in and day out. But my father, being an idealist and a very, very compassionate person and very understanding, at the time when I was going to take admission, my name had come in the philosophy, of course, and in English and Pol Science also in a different category. But he told me, now when you have to finally take admission, do what your sixth sense says. आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर से जो आवाज आ रही है, आप वो करिए. तो मैंने कहा नहीं पापा, आई विल डू फिलोसफी ओनली. मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं, मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं मतलब ना तो मैंने इंग्लिश के टेक्स्ट पढ़े हैं, ना शेक्सपियर पढ़ा है, ना होमर पढ़ा है, ना चौसर पढ़ा है. और मैं जब एमए में बैठूंगी तो जो बीए ऑनर्स करके छात्र आएंगे वो तो मुझसे कहीं आगे होंगे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा. तो मैं इंग्लिश नहीं करूंगी. और पॉल साइंस में मेरी रुचि नहीं थी. तो उनका ठीक है. मैंने कहा पापा देखा जाएगा, मुझे एमए फिलोसफी करने दीजिए, फिर देखेंगे आगे कैसे भगवान ले जाता है. मैंने एमए फिलोसफी किया. एमए फिलोसफी में प्रीवियस में भी मैंने टॉप किया और फिर मैंने फाइनल में आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट. एंड आई जस्ट एंजॉयड क्योंकि मैं खुद लिख सकती थी उसमें. हमारे को मतलब हमारे टीचर्स ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हम अपने टेक्स्ट और अपने नोट से बंधन में बंधे. इशू को समझ लिया, टॉपिक को समझ लिया और खुद लिखते थे. तो मैंने बीए एमए में भी टॉप किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इंडियन फिलोसफी में प्राइज प्राप्त किया. और एज गॉड वांटेड, because I firmly believe man proposes and God disposes, I got a part-time job in one of the colleges of Delhi University. At that time, 10 plus 2 gap was going on, so there were hardly any jobs in the colleges. But luckily, I got this part-time job, which was rupees 500 per month. And I joined Kamla Nehru College. I used to live in Stephens, travel all the way to Kamla Nehru College. Well, I started teaching, and I was very happy. I was very dedicated to my students. I was dedicated to the college, took part in every activity of the college. 3 years I taught part-time in Kamla Nehru College. First in 500 rupees a month and then in 800 rupees a month. This job finished after 3 years. A permanent job came, and due to some reasons, circumstances, I was not given that job in Kamla Nehru because some senior person was given a job. I left that college and again a hunt for the job. Again, luckily, I got a job in Janki Devi College. That was a full-time job, and the teacher in charge of Janki Devi, Dr. Gopa Bhattacharya, was there in the department one day, and she asked me, my head asked me that they need a teacher. Would you like to go? I said, why not? And I went. 3 years leave vacancy, I taught in Janki Devi. And that was also a wonderful experience. Again, I was involved in their theatre, I was involved in their sports, and in their other activities. After 3 years, again on the road, and then again I got a job in Lakshmi Bai, which was again a temporary leave vacancy. Teaching in Lakshmi Bai for 1 year or 2 years, I don't remember now. In 87, my teachers from IP College, from where I am a student also, told me that there's a job, temporary, and it may become permanent later on.
So there was an interview and I applied, and in 87 I got a job in IP. What else could I ask for? After 10 years of waiting, I was back in my alma mater, my college, my strength, my home. So I became colleague of my teachers. At least two teachers who had taught me were there on the staff at that time. And then my journey began in IP college. For 40 years, I was teaching philosophy. Along with that, in 1998, when Indraprastha College, Dr. Aruna Sitej, the principal, wanted to start a professional course in mass media, I was in the team. I am one of the founding members of mass media course in IP College. I was very enthusiastic. So, along with the principal and one more senior teacher, we worked very hard to start the course in the college. And I became the coordinator of that course also. And for 20 years, from 1998 to 2018, I was looking after the course in IP College as the coordinator. I worked very hard for the BMMC course, the prestigious course it is, and brought it to some standard that in 2009 we were the fourth position in the India Today survey. And I have so many students, my first batch, Ritika Jhanji and many others, and after that, so many students who are working all over the place in the media as anchors, as producers, as filmmakers, as photographers, in web designing, and so many other fields. But then my first love was naturally philosophy, so I kept teaching philosophy. Now, coming to the subject philosophy. When I took philosophy, even I thought, what is this philosophy as a subject? Because it was not a school subject. I didn't even know what it comprised of. पर मैंने पढ़ा था. तो उसके बाद मैंने जब कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो देखा फिलोसफी ऑनर्स में बच्चे आते ही नहीं. They don't want, they don't know what it is, so they don't opt for it. They all want to go for commerce, they want to go to psychology, pol science, history, English, even maths, and then computer science came, then computer science. Philosophy, no. So I started doing a lot of career counseling, telling the students about what philosophy is, even when I was in the college. And I was made to sit on the information desk. So many students used to come with low percentage, thinking that where will we get admission. So naturally, philosophy at that time used to have its percentage, admission percentage less than the more popular subjects. And then I used to think that there has to be a platform where students or the candidates seeking admission in college should know what philosophy is, so that they start opting it for themselves with their own wish. So I thought, okay, now after 40 years of teaching, when I have retired from my college, why not help the students who are now going to get admission in college to tell them that yes, even philosophy honors is a choice. So the first thing, what does philosophy means? Philosophy has come out of two words from Greek word philo plus sophia, which means love of knowledge and love of wisdom. So that is the first thing. The meaning of the word itself is love of knowledge and love of wisdom. So that means that whatever you are studying and you are teaching, you have to have love for it, love for knowledge. And even the people who are teaching English or studying English or maths or science or history also will understand their subject only if they have love for knowledge. So, in that way, philosophy becomes the highest subject. With due apologies to all other subjects, my intention is not to criticize any subject. But then, if you study English properly, going deep into it, history properly, pol science properly, then naturally you are trying to get into the depth of the subject. You are philosophizing. Kant was a philosopher, Newton was also a philosopher, Shakespeare was also a philosopher.
besides being what they did. Later on, a scientist gave so many good inventions, and then Shakespeare wrote so many books. But then there is a philosophical view behind the writings. So basically, anybody who goes deep into the knowledge is a philosopher. This is the first lesson I used to give in class to my students. First lecture, first thing is to understand the students who used to take philosophy with very dejected mind, thinking, oh, we didn't get admission in our popular subject, now what to do? We have got this, okay, good college, chalo, yahi le lo. So to tell them that they have not made a bad choice or a wrong choice, one had to tell them that why philosophy is important. A very, very mundane example which I give to all my students is that if you go do philosophy English honors, English MA, history MA, geography MA, physics MA, astrophysics MSc, whatever, and if you go higher into the study and do MPhil, what does MPhil mean? What does PhD mean? MPhil means Masters of Philosophy, Master of Philosophy. PhD means Doctorate of Philosophy. So there you don't get Doctorate of History, you don't get Doctorate of English, you don't get Doctorate of Physics or Astrophysics. You get Doctorate of Philosophy, Masters of Philosophy. The word philosophy is existing there. So what does this mean? It means that philosophy is a subject that when you go deep into any subject, you have become a master of it, or you have reached the level that you are, you know a lot in that field. So if that is there, that means philosophy is a very, very important subject. And yes, because like all other subjects, philosophy honors also became a separate subject. Many of you would not know that about 45 or 50 years back, psychology was not a separate subject. Psychology was a part of philosophy department. Philosophy was one of those subjects which started in University of Delhi when University of Delhi came into existence, along with English, Hindi, Sanskrit, philosophy. So there were people in philosophy who later on bifurcated to psychology, because philosophy and psychology are very, very closely connected than the other subjects. When psychology, our teachers used to tell us, came into being as a separate department, some teachers in philosophy department in all over university were given choice either to stay in philosophy or shift to psychology. Some chose to shift to psychology and some chose to stay in philosophy. Psychology and philosophy got separated basically because psychology became more practical oriented, wanted to, because they study mainly the mind, the behavior, and other things of the human being. And so it became practical oriented also. So it was separated. सो फिलॉसफी जैसे और सब्जेक्ट्स में है, पेपर्स हैं, हिस्ट्री पढ़ें तो इंडियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, अलग अलग चीज़ें आप पढ़ते हैं, सूफिज्म। तो फिलॉसफी में भी उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग एरियाज हैं। बीए लेवल पे आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं, लॉजिक पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, एस्थेटिक्स पढ़ते हैं, फेमिनिज्म पढ़ते हैं। अब फेमिनिज्म जैसा सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट वाले पढ़ाते हैं, पर अप्रोच अलग अलग है। तो फिलॉसफी के भी कुछ क्षेत्र हैं, कुछ फील्ड्स हैं, और अगर हम देखें तो एथिक्स फिलॉसफी का फील्ड है। अब एथिक्स एक ऐसी चीज है, नैतिकता, जिसकी जरूरत हर क्षेत्र में हर इंसान को है। हम सब नैतिक बनना चाहते हैं, हमें नैतिकता की शिक्षा बचपन से दी जाती है। सही काम करो, चोरी मत करो, किसी से लड़ो मत, गलत काम नहीं करो, गलत शब्द मत बोलो। ये सब क्या है? नैतिकता। पर ये ठीक है कि जब हम फिलॉसफी में एथिक्स पढ़ाते हैं तो हम थ्योरीज पढ़ाते हैं, तो उन थ्योरीज का भी कोई मायने होता है। अगर हम वेस्टर्न एथिक्स को देखें तो मान लीजिए हम यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ाते हैं, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल का है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का, मैं आपको यूटिलिटेरियनिज्म अभी नहीं पढ़ा रही, पर उसका बेसिक
एम्फसिस क्या है? अगर एक उसमें प्रोवर्ब में कहें कि डू समथिंग व्हिच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ मेनी और इट इज फॉर यूटिलिटी, पीपल्स यूटिलिटी। और मिल ने तो यहाँ तक कहा, इट इज बेटर टू बी अ मैन अनसेटिस्फाइड देन टू बी अ पिग सेटिस्फाइड। क्योंकि नॉलेज, सोक्रेटिस ने कहा, सोक्रेटिस एक ग्रीक फिलोसफर थे, आप सबने नाम सुना होगा, सुकरात, जिन्होंने कहा नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज ही वर्च्यू है, नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान। और ये शिक्षा हमें अपनी भारतीय संस्कृति में, इंडियन फिलोसफी में भी यही मिलती है कि ज्ञान ही सबसे ज्यादा जरूरी